Hello, good evening. I'm Aarti Yadav here, and welcome again to the Amol Live session. And of course, it's as you all know, it's midnight snacking. So yeah, I'm going to cook today. As I have it. You can see all the preparation already, and the dish name is cheesy broccoli. Well, it's not just a cheesy broccoli, but with mac cheesy broccoli, and there is of course there is one surprise in between, but we'll come to that later. So once again, namaste सभी को और स्वागत है अमूल लाइव सेशन में मिडनाइट स्नैकिंग. So I think let's check the technicality if it's all good. Can you all hear and see it? Can you all hear and see me? So just give a thumbs up or like. Yeah, can you see or hear properly? Just give us a signal so we can move ahead. Very good. Alright, so let's start with the recipe. Before going to the recipe, I will just quickly show you the ingredients that I have here. So as you know, the dish is with broccoli. So I have here the broccoli, which I have steamed broccoli because we have only 30 minutes. And some of here the macaronis that I have also boiled macaronis just for 8 minutes in the with some salt. I have used, as you can see, this are the macaronis, and these are the macaronis I've used, like this one and a half cup of it, as you can see here. So I take this away, and the broccoli I have taken, just you can see this bowl, and because I don't want it too much and not too less. Then we have here, you can use definitely the Amul cheddar cheese and mozzarella cheese because it's a cheesy broccoli, and here 3 tablespoons of all-purpose flour, which is मैदा, और यहाँ पर some कुछ butter लिया है मैंने. It is just about 75 grams butter. Then to make a white sauce, we are going to make a white sauce for this. So इसके लिए मैंने दूध लिया है. I have taken 500 ml, but let's see how much. I will tell you the exact amount when we make the sauce. So let's begin. First of all, I take my butter. I have started the I have already started the gas here, and as you can see, I'm putting all the butter in, and it's on the very low flame for the moment. Low, medium, you can use it. And let the butter melt, and then in this slowly we will add our all-purpose flour, मैदा. अभी normally इसमें broccoli, mac cheese broccoli में you can also add onions and garlic, but it's a midnight snacking, so I'm just trying to avoid this garlic and onion. So I'm just adding now the all-purpose flour, and try that the lumps are not creating. So keep stirring. आप इसे हिलाते रहिए और गैस बिल्कुल
मीडियम टू लो रखें। तो मैंने इसमें पूरा ये मेरा ऑल पर्पस फ्लावर जो है मैदा है इसको इसमें डाल दिया है और इसे मैं कंटिन्यूअसली हिलाते रही। सो नॉर्मली हम लेट नाइट, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जल्दी खाना खाने के बाद में वापस भूख लग सकती है, तो ये एक वन पॉट कुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जैसे लास्ट टाइम आई ऑल्सो शोन द वेरी क्विक एंड ईजी, and I like to do the same. I like to keep the same way of showing you something very quick and easy, because of course in the night we don't want to stand and do a lot of cooking. So I'm just stirring until it gets a little bit cooked. Now कीप स्टरिंग, आप इसे हिलाते रहिए और जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश न टर्न करें। अभी इसके अंदर हमें डालना है मिल्क। मैं थोड़ा सा हीट बढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्विक हो जाए। And now I'm adding slowly milk into this, as you can see. We don't want to get the lumps into this. So आप इससे भी कर सकते हो. This is much easier. थोड़ा मिल्क और डालते हैं। तो मैंने इसमें टोटली हाफ ऑफ अ लीटर मिल्क डाला है एंड I'll keep it stirring. इसे मैं हिलाते रहूँगी एंड थोड़ा सा साइड में क्विकली थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं। So coming back again, so you have to keep stirring until until the bubble starts, until it starts boiling. Perfect. Yeah, I'm actually cooking today a cheesy broccoli, and to give some good flavor I'm adding also macaroni. So broccoli is very healthy, as you all know. It's specifically for the kids, for lactating mothers, and for elderly people. It's really very good. It has a lot of fiber and very good for health. So you can also use cauliflower in this recipe if you want, but I'm using broccoli today. You can make mix as well. Yes, I'm making now the white sauce. That's right. So it's almost ready, as I see now.
Hello Jigna. Hello Maya Sharma ji. Hello Shashank Rao ji. So yes, I'm cooking here the cheesy broccoli. I think a little bit milk maybe is needed. So I'll little add more 100 ml of milk. Very good. At this point, we turn off the heat and take it just here. At this point, we have to add our cheese inside. So सबसे पहले मैं चीज को मिक्स कर लेती हूँ, दोनों भी चीज को. So cheddar and mozzarella cheese दोनों मैंने लिए हैं. You can use also Gouda if you like it, but I'm just using cheddar, which gives a very creamy flavor, and also the mozzarella, which is my kids' favorite. So I'm adding them both, and I hope you will also enjoy this and you will do the same and you like it. So now I'm adding 3/4 of this, and some I will keep it for later use. अभी मेरी heat totally बंद है. So you can see nice. Now in this I add some black pepper. If you want, you can add white pepper powder. I'm just adding a black pepper. That's what I have at the moment. And some nutmeg powder. Nutmeg powder is just to give good flavor. And here you go. So you can see now already the cheese here. At this point I am adding my broccoli into, and also my macaroni. Then I'm using my it's the white sauce, and then you can add some salt to it. I have also added the sauce while doing my broccoli, while cooking my broccoli, and also so now let's put this into our casserole. Broccoli is actually not boiled totally, but it's steamed broccoli. But you can boil
when you boil broccoli, it's not that tasty. It smells, for me, it's not that good. So later on I'm sprinkling this cheese on it. And this is now ready to go into oven. So in the oven it's 180 degrees Celsius, and you can keep it for 20 to 25 minutes. Let's see if we can make this complete. I have preheated my oven. So take this. Ready to go in the oven, and as you see, it's the 180. I have used, okay, the cheese types. Question is which cheese type? I have used the cheddar cheese, and I have used mozzarella cheese. You can also use Gouda cheese if you want. You can mix 3 of it, and it can turn much better, but I don't want to go much higher in fat, so I have just kept cheddar and mozzarella cheese. So here comes with some, I have some throat infection, so I'm just having my tea. Now we have some surprise until our dish is getting ready. Our cheesy broccoli is getting ready. So that's the one who don't like cheese and they want to go without cheese. So it's again a broccoli, but the one which is without cheese. What's the question? We don't have oven. Can we make on gas? Well, I have not really done on gas, but I think you can do it. You can keep it in the pan and you can close the lid and then let the, instead of in the oven, जैसे हम ओवन में रखते हैं तो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो हम थोड़ा सा ब्राउनिश करते हैं, ग्रिल करते हैं, लेकिन अगर आप गैस पे कर रहे हो तो आपका जो नीचे का हिस्सा है वो ब्राउनिश हो जाएगा. सो if you want to make this, आपको अगर गैस पर बनाना है और आपको स्टोव पे बनाना है तो you can make it, or you can without oven also you can eat it. It's still delicious to eat. Just that कि आप फिर मैदा उसमें थोड़ा सा कम यूज़ करें और दूध का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए. सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, ये मेरे पास अगेन आई हैव ब्रोकली बिकॉज there are some broccolis left and some people at my home don't like cheese. So there are options always to make a broccoli without cheese. So this is a broccoli which I am going to cook with besan. So हमारे पास हमने 5 tablespoons बेसन लिया है, कुछ फ्लोरेट्स हैं ब्रोकली के, और यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं क्विकली आपको बता दूँ. ये है हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर है 1.5 स्पून, 1.5 स्पून. ओवन में हम एक्चुअली 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स रखते हैं ताकि अच्छा ब्राउन जो उसका जो ऊपर का जो लेयर है can turn very good brown. लेकिन so we will wait till then, and that's the reason I have taken this recipe, just to give you some surprise, and the people who don't like cheese to eat, they can of course go for this very light recipe with broccoli. So I think I've explained. So so half a teaspoon of haldi powder है,
फिर हमारा 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून मैंने लाल मसाला लिया है, और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तीखा बना सकते हैं। इसको आप बटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस मैंने ऑलरेडी दूसरी डिश बटर में बनाई है, इसको मैं ऑयल में बनाऊंगी। सो आई हैव जस्ट यूज हियर ऑलिव ऑयल। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ऑयल। सरसों का ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है शरीर के लिए, तो यहाँ पर एक्सेस नहीं है मुझे डेनमार्क में, लेकिन इफ़ यू आर इन इंडिया एंड कुकिंग दिस रेसिपी, आई वुड आस्क प्रीफर टू डू इट इन द सरसों के तेल में आप बना सकते हो। इसको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। देन इसमें हम क्विकली ऐड करेंगे ब्रोकली। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अगेन इसमें आप लहसुन भी यूज कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन सिंस इट्स नाइट आई डोंट वांट टू यूज गार्लिक। ये जो रेसिपी है, इसको आप जो कॉलीफ्लावर होता है अपना, उसके साथ भी बना सकते हो। गैस मैंने मीडियम हीट पे रखा है और मैं इसके ऊपर अभी ढक्कन रख रही हूँ। अभी हमें बनाना है इसका मिक्सचर, जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें, ये हमारा बेसन है, ये मैंने लिया है 5 टेबलस्पून्स ऑफ बेसन, और इसमें मैं अभी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, उसको मिक्स करूँगी। तो पहले गया हल्दी पाउडर, फिर गया लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाले को हम बाद में डालेंगे। हम इसमें नमक है जो मैं हाथ से डालना प्रेफर करती हूँ। ये आपके टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको लाल मिर्च पसंद नहीं है, वो आप बिल्कुल भी हरी मिर्च फ्रेश बारीक कट करके उसको आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम अपना ब्रोकली चेक कर लेते हैं। You can see the color, it's really beautiful. इस टाइम पे हमने ये जो मिक्सचर है बेसन का, वो हमें धीरे धीरे इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। आप हाथ से भी कर सकते हो। रेसिपी नेम, दिस इज़ एक्चुअली माई इन्वेंशन, क्योंकि मुझे ब्रोकली खानी थी और आई वॉज फाइंडिंग माई इंडियन वे कि मैं उसको कैसे खा सकती हूँ। तो आई हैव डन दिस बाय माई वे। इसको बेसन के साथ, यू कैन कॉल इट बेसन ब्रोकली और रोस्टेड लिटिल बिट ब्रोकली, तो ये पूरा हमें इसके अंदर डाल देना है बेसन को। एंड लेट्स
मैंने गैस को थोड़ा सा कम कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम वापस लीड रखेंगे एंड हमने इसको घुमाया नहीं है, अभी चलाया नहीं अंदर। वेट अंटिल इट गेट्स एक थोड़ी सी स्टीम अंदर बन जाए, उसके बाद हम इसको, तब तक हम अपना चेक करते हैं। वाओ, इट्स गेटिंग ब्राउन। My cheesy broccoli is getting almost ready. And थोड़ा सा मैंने हीट को ज़्यादा कर दिया है इसके, तो एक स्टीम जो आ चुकी है, अभी हम इसके अंदर इसे शिफ्ट मूव करते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरे जो ब्रोकली के फ्लोरेट्स हैं उसको बेसन पूरी तरह से wrapped हो चुका है। And at this point you can sprinkle some water. So मैंने कुछ बाउल में पानी लिया है और मैं अपने हाथ से इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट रहे। That's it. इसको मुझे वापस लीड रख देनी है। So maybe till that time we can take some questions. What are you teaching, Manjiri Parekh? Okay, I'm not teaching actually, but I'm just cooking and well, I'm cooking. My dish name is cheesy broccoli with macaroni, which is getting ready totally in the oven. And here I have another recipe which is a surprise, as I said, and it was broccoli with basil. Is there any other questions that we can take meanwhile? अब मैंने लीड को उतार के इसे वापस थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि ये सब जगह से, सब साइड से पक जाए। So basically my husband, he doesn't like to have a lot of cheese, so it's actually for him. How much broccoli? It depends up to you. आपके घर में ये जो आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। What's the question? Yeah, how much broccoli? Exactly. तो ये मैंने एक फ्लोरेट लिया है ब्रोकली का। I have not weighted, कि मैंने उसका वेट नहीं किया है, लेकिन आप एक जो नॉर्मल फ्लोरेट होता है वो आप ले सकते हैं। Can we add cornstarch instead of maida? It's a good question, but I can't really respond on that because I haven't tried it. I only share, and I would like to share what I have done already, what I have tried already, and मेरी जो सारी रेसिपीज है वो वही है जो मैंने खुद से ट्राई की हुई है। So you can you can look for it, you can search for it, and if it works, do please let me know. At this time now I am adding मेरा जो गरम मसाला है वो मैंने डालना, एंड इसको वापस, ये गरम मसाला जो है वो ऑफ कोर्स मेरे पास इंडिया से आया हुआ है, which was given by my dad from Bangalore actually. So I don't know actually from where exactly, but it really is very good. हमने मसाला पाउडर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, लाल मिर्च। सो यहाँ पर मैं अपना ओवन बंद कर देती हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेडी। यूहू, मैंने थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया ताकि आपको दिखा सकूँ मैं एग्जैक्टली।
Very good. So you can see already a very beautiful broccoli with macaroni. I will put it ahead so that you can see much better way. Very good. So you can see the color brown पूरा हो चुका है और बहुत अच्छे से brown हुआ है. And here you can see some of broccoli. बहुत ही yummy लग रहा है. So I think we are almost done with our other recipe as well. So here I have my broccoli with besan also ready. इसमें हमें एंड में नींबू डालना है ताकि ये to give a good flavor. So I added lemon, half a lemon inside, and that's it. It's totally ready to eat. I will take a quick my plate, serving plate, to show you how does it look. Oh wow, I can already smell that, and you can see this. इसको आप चपाती के साथ खा सकते हो या फिर जस्ट midnight snacking, sorry, just you can eat it, and that's it. जो ये मेरी cheesy broccoli, and yes, sure, I am going to do that. So now we will take it, and I'll get plate, one more, to show you how does that look. So you can see this is a cheesy, yummy broccoli. You can see inside it's softer and up it is a bit crispy. That's it. And I quickly give a try. It's hot, super, very nice, super yummy. I hope you all liked both the recipes, and thank you very much for joining me for midnight snacking. And I would like to give my special thanks to my lovely daughter here, who is making the beautiful video. So say hi to Yashila. So she's the one. Thank you very much, and Shubhratri, good night, and I hope you will all try this, and let me know your comments or more if I can show you variants. Thank you very much. Good night.